Hello and welcome everyone to this video where we are going to be discussing about the darling of the stock market, the darling of the masses, Reliance. My name is Raja Venkatraman. I'm the co-founder of NeoTrader and also your trading influencer. Been in the market for more than 15 years, happily married with a loving wife and an energetic son who keeps me on the run just like the markets. Well, friends, if you're watching my video for the first time, I would like you to hit the subscribe button and also do not forget to hit the bell icon because that will help you to stay connected with such interesting videos which will help you to think about the market better. तो अब जब रिलायंस के बारे में जब बात करते हैं तो काफी सारी चीजें मन में आती है. सो यू फील लाइक दैट मैट्रिक्स, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर माइंड. You don't know which space Reliance is in, whether it's an oil and gas company, whether it's a data company, whether it's into retail. So there are so many areas. It's a conglomerate and Reliance को analyze करना it's as difficult as catching the dawn, right? Like they say, dawn को पकड़ना मुश्किल है. In the same way, Reliance को just is news base के basis पे analyze करना भी मुश्किल है. But लेकिन यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस काफी काम में आता है एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलायंस रिजल्ट्स एंड when you see the kind of activity which Reliance has been doing, it gives us very good idea कि Reliance में काफी अच्छा momentum है. When you take a look at the Reliance holdings, you can definitely see there has been a decrease from the FI and also the number of schemes which are holding it. So institutional investors have also decreased their holding marginally in Reliance, considering the way the overall markets have moved. So there is a possibility of some exit from big holders. However, we don't have to worry. The overall picture continues to look good. And while the FII holdings have gone down, you can definitely look at the kind of activity which we can do using technical analysis, because technical analysis is a very powerful tool. And I'll be using that to give a good understanding of how can we decode the Reliance results. So पहले हम charts की तरफ चलते हैं, and then when you take a look at the charts, what you're seeing on the charts is the rise which has emerged since mid-December. Okay, the rise which has emerged since mid-December, it has gone on quite well. अगर आप देखेंगे, अगर आप इस पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि इट हैज गॉन टू वेरी इंपॉर्टेंट जोन ऑफ 61.8. तो ये एक इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल है. अगर मैं आपको बताऊं कि इस लेवल का महत्व काफी इंपॉर्टेंट है एक एनालिसिस के तौर पर, और यहाँ पर आकर रिलायंस ने सरेंडर कर दिया है एंड नाउ द प्राइसेस आर मूविंग लोअर, राइट? नाउ व्हेन यू टेक अ लुक एट द डेली चार्ट, इट इज क्लियरली सेइंग दैट इट हैज risen up quite well. It has come to an important resistance zone. ये resistance zone अक्टूबर की हाई से लिया हुआ है और आप देखेंगे कि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है. तो इसे ध्यान रखते हुए अभी हम देखेंगे कि उसका ओवरऑल मोमेंटम कैसा है, राइट? व्हेन यू टेक अ लुक एट द मोमेंटम, आप देखिए यहाँ पे द मोमेंटम इज मोर और लेस न्यूट्रल, राइट? There is no dominance from the bullish side, there is no dominance from the bearish side. और जब आपका कोई पर्टिकुलर dominance ना हो, when you don't have any particular dominance, then you have to clearly understand that we are having a neutral stance. So अब हम जाकर देखते हैं कि अगर हम टाइम फ्रेम हमने कम कर दिया, okay, we reduce the time frame, we are seeing that you can see that ahead of the results, okay, ahead of the results, there is a divergence seen over the last few days, correct? There is a divergence seen over the last few bars. So अगर ये divergence को बरकरार रहना है और ऐड करना है, so the immediate thing what Reliance should be doing is it has to get over an important zone, correct? ये एक ट्रेंड लाइन है. अगर इस ट्रेंड लाइन क्रॉस कर जाए then it will be a very important zone to watch out for. So now based on the setup, based on the momentum, based on the strength which it is showing ahead of the results, you feel that there is a possibility. Could it be a gap up? We don't know. Could it be a gap down based on how SGX is performing? We don't know. But then the overall setup does indicate that
Reliance on the daily chart has come into a neutral stance, और यहाँ पर भी छोटा सा हेल्प मिल सकता है आपको कि ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन को जस्ट तोड़कर इट इज ट्राइंग टू रिक्लेम इट बैक. सो वी हैव टू सी नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन. यस, there is no bearish momentum, there is no bullish momentum, so that clearly indicates that Reliance is a bit clueless at the moment. So now in such a scenario, what do? We always call our friend. We call our friend NeoTrader. Those of you who have been watching my previous videos, you do know that our friend NeoTrader always helps us. So यहाँ पर भी हम NeoTrader का हेल्प लेंगे और देखेंगे कि इस दिग्गज स्टॉक को कैसे समझे और इस स्टॉक पर कैसे कोई व्यू लगाए ताकि हमारा जो इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है उसको हम आगे ले चले. सो नाउ लेट मी जस्ट गो हियर एंड लेट मी शेयर दिस व्यू. सो ये रहा रिलायंस हमारे सामने. अगर आप देखेंगे कि ऑन एन इंट्राडे बेसिस, राइट, ऑन एन इंट्राडे बेसिस हम देख रहे हैं कि currently Reliance is at a very important stage. क्यों? क्योंकि this TS and KS line, we are using the concept of Ichimoku. So Ichimoku Kinko Hyo, it means that you can get a view of the entire market at one glance. And what is that one glance? You get an idea about the immediate term, you get the idea about the future term, you get all the possibilities. So here what we are doing is we are seeing where exactly is Reliance. And when you take a look at Reliance is at a important level. So you can see here, these are the levels and Reliance is just at that level. यहाँ पर intraday पर it is at a important support zone as we begin the next week after its results. Correct? So results हमारे सामने हैं. Results are very good. Results are positive, and we are expecting that it will be able to take care of the prices of Reliance. Now we have to see, yes, it did beat estimates. अभी देखना है कि market का जो estimation है, will it be able to keep the market together, right? It's a major, it will have an impact on the market. So let's see what it can do and what it has to do. Okay, so ये है इंट्राडे चार्ट पर. अगर आप डेली चार्ट पर जाएंगे तो डेली चार्ट पर आप देखेंगे कि रिलायंस इज बिलो दीज जोन्स. ऑलराइट, सो बट नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू बिल्ड सम कॉमनैलिटी, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ लिंकेज so that we can come to some conclusion, right? And what is the conclusion we want to come at? How can we participate in the market and how can we get a real clue about what needs to be done? So यहाँ पर आप डेली चार्ट पर देखेंगे, यहाँ पर है आपका लेवल 2530, करेक्ट. आपका फर्स्ट सेट ऑफ लेवल्स है 2501. If you recall, I had shown that area of those levels as 2500. तो यहाँ पर भी इंट्राडे पर आप देखेंगे कि यहाँ पर, राइट, यहाँ पर है 2538. तो हमारा फर्स्ट लेवल 2530 बन रहा है यहाँ पे. Senko B on multi-day, Senko B on intraday. So 2530 is a important support resistance zone to watch out for. So ये हो गया, right? 2527, 2538. So you can see that this is an important confluence है यहाँ पे. So this is one level. All right. So now if you take a look at the higher time frame, what are you seeing here? You are seeing here that 2407, right? 2407 is on the higher time frame weekly chart is tying up with 2407, which is the support zone on the daily chart. तो higher time frame में आपको ये लेवल्स मिल रहे हैं 2407. अभी करंटली रिलायंस है 2477 पे. तो 2477 से लेकर अगर नीचे आ जाए तो 2407 looks to be a important confluence support, right? 2407. And on the upside, right, on the upside you can see that 2530 could be a important zone to watch out for. जो हमने इंट्राडे के लेवल पे देखा
और मल्टी डे लेवल के देखा. सो वी हैव गॉट सम एक्शन पॉइंट्स फॉर द coming session, where for the next few sessions in the coming week, we have to see whether Reliance will open with a gap up or with a gap down. But then looking at the way the charts are structured, looking at the way the levels are positioned, we are very clear that the overall momentum is there with Reliance. So अगर आप इंट्राडे में भी देखेंगे, so it is between pivot to S1, यानी there is no bearish momentum yet. Now when you take a look at the multi-day, again it is between pivot to S1, so there is no bearish momentum yet. Now when you take a look at the weekly charts, right, the support levels are far below. And if you take a look at the bullish score, Ichimoku bullish score, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो it is 77. That says that it is in an extremely strong trend. Correct? So Ichimoku bull score definitely says that Reliance is in a very good strong trend. So अगर आपको ध्यान रखना है Reliance में, तो आपको तेजी के तरफ ही रखना है. Yes, at the moment the prices are stagnating because of the overall market situation and also because the results were coming up. But now with the results being come out in a positive frame of mind, it could play a part in helping the markets retain its current state and also fuel some upside. So अगर upside के बारे में बात करेंगे, आपके सामने आ गए हैं levels which is 2407 on the downside, 2530 on the upside. और हम थोड़े और इसको फाइन ट्यून करेंगे यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फिबोनाची पिवट. तो फिबोनाची पिवट पर हम चलते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है. जैसे कि हमने एनालाइज किया कि अब तक बेरिशनेस नहीं दिखा रहे हैं इंट्राडे मल्टीडे में. पोजिशनल में बुलिश स्कोर ज्यादा है, इचिमोकू बुल स्कोर इज मोर. सो वी विल कंटिन्यू टू हैव अ overarching view of a bullish bias. Why? Because we have a grandfather father son approach. तो हम उस टेक्निक को यूज करके हम देखेंगे कि कैसे हम मार्केट में बुलिश रहे रिलायंस में, और रिलायंस में बुलिश रहने के लिए क्या है वो लेवल्स जिसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा. सो लाइक आई सेड 2500 इज योर फर्स्ट लेवल. करेक्ट? तो अगर आप देखेंगे आपके सामने है एक इंपॉर्टेंट 2500, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. तो ये है एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस जोन जहां पर आप देख सकते हैं कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल टू क्रॉस. एंड वंस इट क्रॉसेस दिस, राइट, वी स्पोक अबाउट 2538. करेक्ट? 2538, 2540 is here. So you can see here that 2530, we had mentioned 2530. 2530 will be at R3. So as an intraday player, 2530 will be an important level to watch out for. And why? Because 2530, okay, let us just number them so that आपको भी ध्यान में आ जाए. ये है आपका पहला पड़ाव. Then you have these zones 2530. तो आपके सामने ये कॉन्फ्लुएंस जोन बन रहे हैं, राइट? एंड यूजिंग द कंबाइंड एफर्ट ऑफ फिबोनाची एंड इचिमोकू, यू आर नाउ एबल टू गेट अ वेरी वेरी गुड व्यू. और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये हो गया आपका सपोर्ट जोन. ये मैं ए करके मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे. आप देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन. जब ये लेवल टूट जाए तो यू नो दैट 2427, 2407 which we spoke about, that will come much later. So now as we go into the next week, these are the levels you got to watch out for. क्योंकि S1 के नीचे थोड़ी वीकनेस आ सकती है और ये कॉन्फ्लुएंस जोन के ऊपर जब चलने लगे रिलायंस, यू कैन एक्सपेक्ट द हायर लेवल्स. सो यस, वी हैव सेट ourselves for a very strategic play in Reliance. We have seen the chart setup, we have seen the momentum setup, and now we have also know exactly how to analyze it. So this is the benefit of using a powerful software like NeoTrader, जहां से आपको पता चलेगा कि exact levels कैसे हैं. कोई भी स्टॉक रहने दीजिए,
आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बरकरार रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि यू कैन बी प्रिपेयर्ड सो दैट द मार्केट डज नॉट सरप्राइज यू. So if you want to be not, if you never want to be surprised by the market, you want to prepare yourself. And to prepare yourself, you need Neo Trader so that your journey in the market is always a fruitful one. Thank you for watching this video. Till we meet again, this is Raja Venkatraman signing off. Have a good day.